अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आस्क अल्फा। आज हम जा रहे हैं जनाब एक बहुत ही यूनिक म्यूज़ियम जिसका नाम है पुलिस म्यूज़ियम। रास्ते में जैसे आप देख सकते हैं कि जी बारिश हो रही है शदीद। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। मैं आपको रास्ता भी दिखाते जाता हूँ और वी आर ऑन योर वे। लेट्स सी म्यूज़ियम कैसा है। स्टे विद अस। जी फाइनली हम ग्लासगो पुलिस म्यूज़ियम आ चुके हैं। बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है, वेदर बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, बारिश हो रही है बहुत तेज़। खैर फाइनली भी आए, दिखाते हैं जी और देखते भी हैं कैसा इस म्यूज़ियम में है क्या जो इसको यूनिक बनाता है। और जी हम हो गए हैं दाखिल अंदर। अब हम देखते हैं कैसा है ये म्यूज़ियम। और एक जनाब हम आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर इस टाइम, और मेरे साथ इस टाइम जो हैं आस्टर मौजूद हैं जिन्होंने ये बुनियाद रखी है यहाँ पे इस म्यूज़ियम को बनाने में, और इसका देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी इनके पास है। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि म्यूज़ियम है क्या। Thank you so very much, also. How are you? Yes, welcome to the Glasgow Police Museum. Thank you. It's the museum of Britain's first police force. We're all told at school in the UK here that Robert Peel founded the police in 1829 in London. But Glasgow had a police force in 1800. 1800, yeah? Yeah. And that was an Act of Parliament from King George III. King George III. Yes. So it is way before the UK and anybody else have a Yes. police act with them. That's correct. Oh right. And it started the police force in Glasgow, and it allowed the city fathers to tax the people to pay for it, which made it sustainable, and it lasted for 175 years. 175 years this act was in place. Yes. Wow. Great. So can you please tell us around, show us around the things. I saw some artifacts over here. Yes. Can you please tell us about that? Well, this is the style of uniform that policemen wore in these days. It was a top hat and a tailcoat. Now the top hat showed status for the person, and it showed that he had status to deal with the other people, and also the tailcoat meant it was synonymous with a servant. So it showed he had status, but he was a servant of the people. Servant of the people. Is this some sort of police clappers and Yes. police rattlers? That was the communications. That was communications for the policeman. If he needed help, they had a rattle or a clappers, and he would use the rattle and create the noise, and the policeman from the next area would come and help him. Wow. So that was the thing which was used initially in 19th Yes. century. Long before the police whistle came out. Alright, and they used to have these swords as a weapon? Yes, the cutlass was carried in the early stages of policing in order to defend themselves, because Glasgow was a military town. And there was a lot of soldiers with swords, etc. So the policemen had to be able to defend themselves. Alright. And, that was why they had carried swords. Alright, जैसा कि आपने देखा कि ग्लासगो पुलिस यूके में सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी, और जिस तरह आपने बताया कि ये पहले ज़माने के आर्टिफैक्ट्स हैं और लोग जिसे कहते हैं कि ऐसे इस्तेमाल करते थे क्लैपर्स को, ये नॉइस पैदा करते थे ये चीज़, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे अपने लैंग्वेज के अंदर। हम आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीज़ें दिखाते हैं, एंड आई एम होपिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक टुडे।
machine gun post. जरा मेरे पीछे वो पोस्टर मौजूद है जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं फिल्मों के अंदर और कार्टून्स के अंदर जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं they used to be real. Just check it out. Wow. One of the two. Yeah. William Watson. This is only about 3 years. स्टोन ऑफ डेस्टिनी मूवी के जो स्टोन इस्तेमाल हुआ था वो ये है रियल जो है वो वाली ब्रेक किया जा चुका है आप देख सकते हैं पास्ट के फेमस केसेस उनसे इशू किए हुए वारंट्स किस तरीके की वर्दी होती थी किस तरह के लोग वहाँ पे जो है चीज़ों को पहना करते थे किस तरह के पोस्टर्स लगा करते थे एवरीथिंग इज हियर फ्यू मॉडल्स इफ यू सी बहुत ही अच्छा लगता है ये जान के कि पुलिस किस तरह हुआ करती थी किस तरह इवॉल्व हुई किस तरह पहले लोग जो है वो सारी चीज़ों को किया करते थे और अब किस तरह किया जाता है I really love that. Assistant Chief Constable Walter Doherty, the most decorated policeman, and these were all medals. मेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते रही हैं. पुलिस इंस्पेक्टर एलिजाबेथ हंटर, फीमेल का यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं कैसे हुआ करता था. इसी तरह वुमेन पुलिस कांस्टेबल विवियन, उनकी अचीवमेंट्स, what they used to carry and what type of caps they used to wear. ख़वातीन का भी बहुत अहम किरदार रहा है माजी में और मुस्तक़बिल दोनों में, रहेगा भी, इसमें तो कोई शक नहीं. जैसे जैसे पुलिस ने तरक्की की उनके इक्विपमेंट्स भी अपग्रेड होते रहे. मैं आपको दिखाऊंगा किस किस्म के रेडियोस वो इस्तेमाल करते थे. दैट्स रियली कूल. लैंप्स, मॉडल्स, डिटेक्टिव सर्जेंट का बैच और पास, वारंट कार्ड, राइट्स वगैरह वो किस तरह कंट्रोल करते थे, किस यूनिट में थे, पुलिस कैरेट्स,
quite fascinating. एक नहायत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऐसे भी रूम है जिसमें मैं इस टाइम खड़ा हूँ कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ममालिक के पुलिस का यूनिफॉर्म और उनके बैजेस भी रखे हुए हैं. इट्स रियली अमेजिंग. लेट मी शो यू. Scottish police badges. ऑलराइट गाइस, मेरे साथ इस टाइम क्रिएटर मौजूद हैं जिन्होंने इस म्यूजियम को बनाया है और थैंक यू सो वेरी मच फॉर with us, Alistair. I'll just like to ask a few questions and that very quickly. That's an amazing thing you have done. How this idea came to you, right? Well, I've always been interested in police history, and I have a collection of police items, including this room here is all my collection, and some of the historical stuff. And when I retired, I felt that we needed a police museum that the public could come in without an appointment or anything and just look round and appreciate the innovation and the development of policing in Glasgow. Police museums are quite popular in Britain. They're usually in headquarters of police forces, so people don't really get the access that they should. But we wanted to change that and give people normal walk of life people coming in rather than just policemen. Alright, guys, he also served in police himself, so let's ask about this question now. You told us that you already served in that. How much time you have served with the police of Scotland? Well, I served 33 years. 33 years? Yes, and I retired 24 years ago. And I've been doing this for 20 years. Before your retirement, you established this thing? Yes, once I retired, I set it up. So you're taking care of all this yourself, or you have a team with you? I have a great team with me. We have about 16 people, and we man it 7 days a week for 7 months of the year, the summer season. And they come and volunteer to help, and we run it like a proper museum.
So you all guys are here on volunteer basis. Yes. This thing, when you establish that you're creating their maintenance and school, it will cost you. How you are maintaining the cost? Because it's free of entry. I came free. I didn't pay Yes. for penny. Well, we have a donations box, Mhm. and people are very generous to leave a donation for us, and that helps us. And at the moment, it's paying everything we need to pay. Obviously, there'll come a time when the expenses will exceed the income, but we're going to just keep going as long as we can. That's really amazing, guys. आप लोगों को बताते चलूँ, बहुत ही अमेजिंग जगह है। पुलिस की हिस्ट्री से लेकर मौजूदा दौर तक सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। I really like to thank you for giving your time and letting me just view all of your collection. One thing more before I finish this thing. You told me you have a different uniform collection. I was wondering about my country, but you told me that you have around 200 plus collection or something? 200 uniforms. 200 uniform collections. Yes. And different countries, 200 different countries. Well, they've got some that are true. I mean, from Pakistan, I have the Frontier Constabulary and also the Punjab Police. Mhm. So there's some countries I only have one from, some countries I have more than one. So if I say you have more than 100 of countries uniform, Yeah, about 150 countries. 150 countries. Guys, that is really really amazing. 150 कंट्रीज से ज़्यादा यूनिफॉर्म्स की कलेक्शन मौजूद है, क्योंकि जगह छोटी है तो वो रैपिडली हर ईयर बेसिस के ऊपर यूनिफॉर्म्स है वो चेंज होते हैं. I really enjoyed that thing. Thank you so very much for giving me time. It was a pleasure meeting you and looking at your collection. my pleasure. It was great. Thank you so Thank you very very much. God bless. Alright guys, हमने विजिट किया पुलिस म्यूजियम. It was really fantastic. The way the people are managing, they are really good. Just to हम थोड़ा सा अपना भी हिस्सा इसमें डाल सकें या कुछ, तो मैंने एक छोटा सा सोवेनियर भी ख़रीदा है इनसे. एक सोवेनियर भी लिया है जो बड़ी प्यारी सी एक कीचन है. There you go. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनकी वेबसाइट का लिंक आपको दूंगा, आप जाकर उसको विजिट करें. मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा. इट वॉज रियली नाइस टू बी हियर एंड सी हाउ फैंटास्टिकली दे आर मैनेजिंग इट अप. अपना और सबको बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द फिर. अस्सलाम वालेकुम.